So, dear students, let us start the lesson number 14. 13 we have already completed in the grammar textbooks. Lesson number 14 is the 7 basic pattern that was completed, and the 14 is sequence of the tenses. In the grammar, sequence of the tenses. What is the sequence of the tenses? The tense of the verb in the subordinate clause follows the tense of the verb in the principal clause also. In accordance to it, sequence of the tenses are decided. What it means? Now see what happens. Generally, sequence of the tenses are studied in the clauses. We require to know the sequence of the tense in the clause. Now, sequence of the tense, if we require to study in the clause, why in the clause? Clause is a pattern where there are two sentences in one sentence, that is complex sentence. Right? So we have two sentences in one sentence, that is complex sentence. In complex sentence, what happens? There are pattern S plus V plus S plus V plus O, maybe like this, or maybe it may be S plus V plus O plus V plus O. So anything like this. That means there are two verbs. This one, this one, this one, this one. Right? So there are two verbs working. If the verbs are working, that means the tenses are working. So what tense shall come first and what comes the next, that is known as the sequence. Sequence मतलब क्या कि कौन किसके बाद आएगा, कौन किसके बाद आएगा, right? So now we know that the basic English pattern is subject plus verb plus complement. Okay, and now look at the following sentences. The station master will say that the train is late. Okay. So, the station master will say that the train is late. For second sentence, he told me that he was going to Delhi and would stay there with his friend. Right? So, he told me that. He was going to Delhi and would stay there with his friend. Okay, so he told that he was going to Delhi and would stay there with his friend. Now see what happens. He told me, past tense. Now something he told me. What he told will again come in the past tense, that he was going to Delhi and would stay there with his friend. And in the past, he is talking of the future, that he would stay there. Right? Now if I talk about the future now, what I'll say, I will stay there. I am going to Delhi and I will stay there with my friend. So that is the sentence. So this sentence is spoken in this past. I am going to Delhi and I will stay with my friend. But when you, tomorrow if you tell this same sentence to somebody else, that principals are said that he told me that he was going to Delhi and would stay there
with his friend, right? So the first tense का अगर change हुआ past, तो second sentence में भी क्या होगा, tense change होगा. इसे कहते हैं sequence of the tense. तो पहले कौन सा आना चाहिए, कौन सा नहीं आना चाहिए, that we are going to learn today. Okay, so in the above two sentences we find that there are two or more than two parts of each sentence that have a verb and verb phrase. अब इसमें क्या है, he told me that, told एक verb है, he was going to Delhi, was going to Delhi और एक verb phrase है, he would stay there और एक verb phrase, तीन verb हो गए, right? So अभी ये तीनों का sequence होना, correct होना. अगर मैं ऐसा कह देता हूँ he told me that he is going to Delhi, then sentence wrong हो जाएगा. पहले sentence में क्या आया, past आया, he told me मतलब past में कहा. तो I am going to Delhi ऐसे कैसे चलेगा, he is going to Delhi ऐसे कैसे चलेगा, नहीं चलेगा. इसे कहते हैं sequencing. Okay. Often the two parts in such sentences are joined together by linking words that, because, who, each, but, then. So ये clauses बनते हैं या फिर sentences join होते हैं conjunction से. और ऐसे sentences में, दो sentences में जब दो join होते हैं तो पहले वाले sentence में कौन सा tense होना चाहिए और दूसरे वाले sentence में कौन सा tense होना चाहिए, that we are learning, right? The first part in such sentences is called independent or principal or main clause, and the second part is called subordinate clause. तो clause में दो part होता है, एक main clause होता है, एक subordinate clause होता है. मेन क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज या सब क्लॉज कहते हैं, है ना. इन सच सेंटेंस व्हिच हैव वन प्रिंसिपल क्लॉज एंड वन और मोर देन वन सबऑर्डिनेट क्लॉज. तो क्लॉज कैसे बनता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है प्लस एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट हो सकता है और एक कितने भी सबऑर्डिनेट क्लॉज आप चाहे कितने बढ़ा सकते हैं. क्लॉजेस तीन टाइप के हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज. तो एक सेंटेंस में कितने एडजेक्टिव आ सकते हैं, ढेर सारे, तो उतने क्लॉज भी आ सकते हैं, राइट. तो एडजेक्टिव क्लॉज हम 2, 3, 4 भी यूज कर सकते हैं, राइट. एडवर्बियल क्लॉज, एडवर्ब यानी टू से समथिंग अबाउट द वर्ब, राइट. सो एक वर्ब के बारे में अगर हम एडवर्ब 4-5 यूज कर सकते हैं सेंटेंस में, तो एडवर्बियल क्लॉज भी 4-5 यूज कर सकते हैं, राइट. सो इस तरह से ये सेंटेंसेस एक सेंटेंसेस में बहुत सारे पार्ट्स क्रिएट हो सकते हैं. इन द वर्ब द प्रिंसिपल क्लॉज इज द प्रेजेंट टेंस. द वर्ब इन द सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज कैन बी एनी टेंस. फॉर एग्जांपल, सपोज अगर क्लॉज में, इंडिपेंडेंट क्लॉज में, प्रिंसिपल क्लॉज में जो टेंस है वो अगर प्रेजेंट टेंस है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में कोई भी टेंस यूज हो सकता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 सेंटेंसेस, ही एश्योर्स मी दैट द ट्रेन हैज अराइव्ड, ही सेज दैट ही केम एट 8 PM, राइट. सो अगर पहला वाला सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ प्रेजेंट टेंस है, राइट, क्लॉज में पहला जो पार्ट है वो प्रेजेंट टेंस है, तो नेक्स्ट पार्ट जो है इट कैन बी एनी अदर टेंस, इट कैन बी एनी अदर टेंस. यानी कि क्या हुआ इसमें, क्या हुआ, देखने वाली बात क्या है, फर्स्ट पार्ट जो है क्लॉज में, जस्ट क्लॉज का, सपोज इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस डिपेंडेंट क्लॉज. इफ इंडिपेंडेंट क्लॉज हैज प्रेजेंट टेंस, स्पेशली सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, इफ इंडिपेंडेंट क्लॉज हैज प्रेजेंट टेंस देन डिपेंडेंट क्लॉज में कोई भी क्लॉज आ सकता है. डिपेंडेंट क्लॉज में एनी टेंस, डिपेंडेंट क्लॉज में कोई भी टेंस यूज कर सकते हैं. 5 एग्जांपल दिए हैं, रीड दोज एग्जांपल.
Second, if the verb in the principal clause is in future tense. अब independent clause, if it is in future tense, then in the dependent clause we can use any tense. तो दूसरा आने वाला जो सेंटेंस है उसमें हम कोई भी टेंस यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, he will assure me that the train has arrived. Right? He will promise me that he has completed the homework. Right? So इस तरह से हम पहले वाले इसमें फ्यूचर टेंस अगर यूज किया है तो सेकंड वाले सेंटेंस में कोई भी टेंस यूज कर सकते हैं. सीक्वेंस ये होता है. Mom will say that dad was late, father was late. तो हम मम्मी के पास जाएगी तो मम्मी बोलेगी कि खाना तो खत्म हो गया. सो मम्मी बोलेगी फ्यूचर टेंस और खाना तो खत्म हो गया पास्ट टेंस. So in the first sentence, if we use future tense, then in the dependent clause we can use any tense. Simple ये present tense और future tense से ऐसे combination है. But the third combination is if the verb in the principal clause is in the past tense, the verb in the dependent clause must be in the past tense. पर अगर पहला वाला sentence जो है if it is past tense, then second वाला sentence must be in the past tense. Past tense के साथ present और future के जैसा नहीं होता. present और future कैसा है? पहले sentence में अगर present tense है तो हम दूसरे में कोई भी tense यूज कर सकते हैं. पहले sentence में future tense है तो हम दूसरे में कोई भी tense यूज कर सकते हैं. लेकिन but if in the principal clause we are using past tense, then in the dependent clause we must use past tense. That is the important rule to remember, right? For example, mom, he told me that he told me that he came late. उसने मुझे बोला कि वो लेट आया था. He told me that he came late. अब इसमें एक चीज है, पहले वाले सेंटेंस में पास्ट टेंस है लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में if इस रूल का एक्सेप्शन क्या है? If in the first principal clause past tense is used, but in the dependent clause if there is universal truth, for example सूरज कहाँ से उगता है? पूरब से. कल भी वही सच है, आज भी वही सच है, आगे भी वही सच है. वो चेंज होगा क्या? नहीं होगा. दैट इज यूनिवर्सल ट्रूथ, राइट? तो अगर यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंसेस यूज किए गए, तो वो कौन से टेंस में आते हैं? हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में. तो अगर मैंने पहले सेंटेंस में यूज किया कि he told me that the sun rises in the east, तो वो करेक्ट है. मतलब पहले में पास्ट है और दूसरे में प्रेजेंट टेंस है. पर कब? when the second dependent clause is stating universal truth और daily habit. जैसे कि मैं रोज न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ. he told me that he reads newspaper every day, right? So that is his habit. Universal truth, habit, and such things, those are unique. For example, Taj Mahal is beautiful. He told me that Taj Mahal is beautiful. So he told me that Ganga is sacred river. तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पे ये अलाउड है, राइट? इन तीन में यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिकनेस and what we say, habit, daily habit. So there it is allowed. Now for the see, in short, the sequence or order of the tenses required what in principal clause verb. एक चार्ट दिया है, देखो. प्रिंसिपल क्लॉज में क्या चाहिए? वर्ब चाहिए, प्रेजेंट और फ्यूचर का, लिंकिंग वर्ड चाहिए और सबऑर्डिनेट क्लॉज चाहिए.
ऐसे होता है। तो ऐसे जब 3 पार्ट होंगे तब पहले पार्ट में कौन सा टेंस है वो देखना है और दूसरे पार्ट में कौन सा टेंस है वो देखना है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द सीक्वेंसेस ऑफ द टेंसेस। दिस इज कॉल्ड द सीक्वेंसेस ऑफ द टेंसेस। क्या है? प्रेजेंट टेंस, इन द सेकंड टेंस एनी टेंस, फ्यूचर टेंस, independent clause, in the second dependent clause any tense can be used. Independent clause past tense, then in the dependent clause must be used past tense only. ठीक है, तो ये है लेसन नंबर 14. This was lesson number 14. Now in this lesson number 14, exercise number 1, 2, and page number 83, 1 and 2, 3. These exercises are given. इसमें क्या करना है? देखो ध्यान से क्या करना है। पहला है I think Karan is working on English assessment. On his English assessment. I thought Karan was working on his English assessment. Okay. So rewrite the following sentences, changing the italicized verb in each sentence into simple past tense and making other necessary changes. Okay. So पहले जो इटैलिसाइज्ड वर्ब है उसको पास्ट टेंस करना है और आगे जो भी चेंज होगा वो सारा चेंज करना है, ठीक है। सो इस तरह से ये एक्सरसाइज है, ए और बी एक्सरसाइज है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स है, पेज नंबर 83. We eat that we dash leave. We eat that we may leave. फर्स्ट में क्या आया? प्रेजेंट टेंस. सेकंड में भी क्या आएगा? प्रेजेंट टेंस या फिर एनी अदर टेंस वी कैन यूज. इन दिस वे you have to fill in the blanks, then choose the correct form of the verb and then correct the following sentences. What is mistake over there, that you have to find out and correct it. Solve the exercise. Okay dear students, now in the next video we will take the lesson number 15.